How are you? Welcome to your new video lecture, Standard 8 English Medium. वंदे मातरम. Students, आज हम आपका यूनिट नंबर 4 माय पॉइंट ऑफ व्यू की एक्टिविटी 8 से स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टिविटी 7 देखी. हमने उसमें देखा था पैसिव रचना और एक्टिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं. इसमें उसमें किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, यानी कि अगर पैसिव हो तो उसमें डूअर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, और एक्टिव में डूअर को यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती थी, जो हमारे ग्रामर का एक टॉपिक का पार्ट था. आज हम आप देखेंगे आपकी बुक में, आप ओपन कीजिए पेज नंबर 15, एक्टिविटी 8. स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 8 में एक जो यहाँ पे एक इंटरव्यू आस्क्ड डॉक्टर सागन टू गिव हिज व्यू ऑन द एग्जिस्टेंस. कार्ल सागन, जिसने अपना एक यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, उसने कहा है, ये इंटरव्यू बाबत इंटरव्यू के जैसे है. एक्टिविटी 8 रीड करते हैं. रीड दिस इंटरव्यू विद कार्ल सागन, अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, जो कि एक साइंटिस्ट है. एज ही डिस्कसेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करता है, डिस्कस करते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ. एज यू रीड, अंडरलाइन एनी वर्ड्स दैट आर न्यू फॉर यू. अगर इसमें आप कोई न्यू वर्ड्स रीड करते हैं तो आपको यहाँ न्यू वर्ड्स में लिखते जाएंगे. तो हम भी यहाँ पे एक्टिविटी 8 के न्यू वर्ड्स है वो लिखते जाएंगे. न्यू वर्ड्स, हम जैसे ही न्यू वर्ड्स को पढ़े हमें ये वो न्यू वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं. After you read, ask your classmate, use dictionary or ask your teacher for help with words you don't know. फिर ये जो words है उसमें से आपको डिक्शनरी में से या फिर आपके क्लास टीचर से, क्लासमेट से जो न्यू वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग पता करना है. हेल्प एवरीवन इन योर क्लास अंडरस्टैंड द रीडिंग, और अपने क्लास में सभी को हेल्प कीजिएगा. देखिए कार्ल सागन की यहाँ पे साइड में पिक्चर दी है. उन्होंने एक स्लोगन भी लिखा है, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नाउन. द इंटरव्यूअर आस्क्ड डॉक्टर सागन to give his view on the existence of intelligent extraterrestrials and the many sightings and reports from people who say that they have seen these beings on the earth. तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने कार्ल सागन को एक क्वेश्चन किया. तो उस क्वेश्चन के आंसर में कार्ल सागन ने कहा, कार्ल सागन, I personally have been captured by the notion of the extraterrestrial life and especially extraterrestrial intelligence from childhood. इसमें captured और notion ये दो न्यू वर्ड्स हैं, capture और notion. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स लिख देती हूँ वो आपको होमवर्क में अपनी बुक में लिख के उसका मीनिंग पता करना है. It swept me up and I have been involved in sending spacecraft on to nearby planets to look for life and in the radio search for extraterrestrial intelligence. फिर आगे, if we found intelligent life on the other planets, it would be an absolutely transforming event in human history. इसमें एब्सोल्युटली और ट्रांसफॉर्मिंग ये न्यू वर्ड्स में आते हैं. Absolutely and transforming event in human history. But the stakes are so high on whether it's true or false that we must demand the more rigorous standards of evidence. We have to be very careful. इसमें stakes और rigorous. Next, victorious. आगे
for extraterrestrials' intelligence and disbelief that we were being visited. I don't see any contradiction at all. इसमें contradiction ये भी new word है. The idea of being visited is a wonderful prospect, but requires the most severe and rigorous standard of evidence. Prospect. The interviewer asked Dr. Shagan to comment on the stories that people have told of being abducted and kidnapped by the extraterrestrials. He was asked if these people have provided strong evidence for extraterrestrials having visited Earth. इसमें भी दो वर्ड आए हैं और kidnap और abducted. Carl Sagan ने आंसर दिया. The evidence is almost entirely anecdote. Someone says something happened to them and people can say anything. The fact that someone says something doesn't mean it's true. इसमें anecdote ये यूनिवर्स है. To be taken seriously, you need physical evidence that can be examined by skeptical scientists. For example, a scraping contains elements that don't exist on Earth. Skeptical, ये यूनिवर्स है. Skeptical. But there is no scraping or other evidence. All there are stories. There are instances of distribute soil, but I can distribute soil with shovel. Shovel ये एक इंस्ट्रूमेंट है. There are instances of people claiming to flash lights at UFOs and UFOs flashback, but pilot of airplanes can also flashback, especially if they think it would be a good job to play on UFO enthusiastic. So that does not constitute good evidence. ये थी हमारी एक्टिविटी 8. तो आप ये एक्टिविटी 8 के ये जो न्यू वर्ड से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये होमवर्क में आपको कंप्लीट करके आना है. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी एक्टिविटी 8 यहाँ पे कंप्लीट. नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 9. देखिए आप इस यूनिट में बहुत सारे आइडियाज आपको एक्सप्लोर हुए हैं कि बहुत मिले. इन एक्टिविटी 3 यू गेव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एक्स्ट्राटोरियल लाइफ एंड लिसन टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर क्लासमेट. इन एक्टिविटी 5 and 6 you summarized UFOs in India, plants or planets, and you looked carefully at the information that different sources in UFOs in India, plants or planets provided about the sighting in India. Finally, in activity 8, you read an interview with Carl Sagan, a respected scientist, about the kind of evidence that would be needed to show that extraterrestrial life exists. Remember that evidence is information that
us something is true. यहाँ पे बॉक्स में लिखा है evidence is fact that show clearly that something exists or true. यहाँ पे evidence is information that we can use to help explain why we think what we think. When we give our opinion or idea, people often ask why we believe what we do. One way that we answer why is with information and facts from different sources. अब देखिए, use everything you have learned and through about the answer the following question. आपको ये क्वेश्चन आंसर होमवर्क में लिख के आना है. What do you think the Indian Army truly show? आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी के बारे में आप क्या सोचते हैं. आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि the Indian Army spent 6 months watching airplanes or satellites, but in fact they might have watched the rising and setting each night of the planets Jupiter and Venus. इस टाइप का आंसर भी आप इसमें लिख सकते हैं. तो एक्टिविटी 9 हमारी सिर्फ रीड आउट करने की थी. नाउ एक्टिविटी 10. Activity 10. The universe is such a huge place that many people think there must be other life somewhere in it just because it's so huge. The universe is so huge that it must be measured in light years. Light is the fastest light thing we know. It travels at 299,373,792,5458 meters per second. Again read. It travels at 299,792,458 meters per second. एक सेकंड में इतना ट्रैवल करता है. Our sun is 8.33 light minutes away, meaning it takes the light from the sun 8.33 minutes to reach us. आप सब जानते हैं कि सूर्य की जो रेज है हमारे तक पहुंचने में उसे 8 मिनट और 33 सेकंड लगते हैं. Imagine how far away the light year must be. तो आप सोचिए कि ये जो लाइट ईयर है वो मस्ट कितना दूर होगा हमसे. The most distant part of the universe that scientists have evidence of comes from light that has taken 14 billion years to reach us. It is 14 billion light years away, and there may be many more universes farther away than that. यहाँ पे आपको यहाँ साइड में दिखा है कि 1 लाइट सेकंड इज 299. अभी जो हमने पढ़ा था वही साइड में लिखा है 792.458 kilometers. 1 light minute is 17987,574.5 kilometers. The nearest star is Proxima Centauri and it is 4.243 light years away from Earth. इतना अर्थ से दूर है. As Carl Sagan said, somewhere something incredible is waiting to be known. आप जैसे कि कार्ल सैगन ने कहा कि कहीं पे कुछ तो अतुल्य जो है हमारे लिए हमारा जाना हुआ हमारा इंतजार कर रहा है. Imagine what incredible beings might be live 14 billion light years away from us. They would live so far away that it would take 14 billion years for the light from their sun to the reach Earth. What might these beings look like? What abilities would they have? Are they intelligent? Do they have language? Do they have some homes or shelters? What would they like? What would they need? Do they eat? Do they have emotions? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको होमवर्क में करके आना है. और यहाँ पे जो बॉक्स में फिलअप करना है वो मैं आपकी वर्कबुक में मैं फिलअप करके आपको कल में PDF सेंड कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तो हमारा ये जो टॉपिक है यूनिट 4 माय पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मेरे देखने का नजरिया, क्योंकि सबके अलग अलग नजरिया होता है देखने का. तो यहाँ पे जो पूरा टॉपिक है सबका अलग अलग नजरिया है, किस टाइप से है वो हमने सीख लिया. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी वर्कबुक की PDF सेंड कर दूंगी, आप अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है.
आपको जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है सो नो प्रॉब्लम, जब स्कूल वापस ओपन होगी हम वापस शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।